Assalamualaikum dear students. In previous lecture you have seen the definition of Downer syndrome. That means Downer syndrome, sometimes called as Down syndrome. It's a genetic disorder. इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक चाइल्ड है वो बॉर्न होता है विद एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ देयर 21st क्रोमोसोम्स. Hence its other name is trisomy 21st. Trisomy 21st. Also in addition to this, आप लोगों ने देखा what are the three types of Downer syndrome, that is trisomy 21st, translocation and mosaicism. Now in this lecture you will see what are the signs and symptoms of Downer syndrome. That means what are the clinical features, clinical manifestations of Downer syndrome. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होते हैं डाउन सिंड्रोम में, यूजुअली जो चिल्ड्रंस होते हैं, चाइल्ड होते हैं, बेबी होते हैं, दैट आर हैविंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टू दोज ऑफ तिब्बतियंस, जापानीज एंड मंगोलियंस. सो डाउन सिंड्रोम, एज यू रिमेंबर, पहले ही मैंने कहा था जो ये डाउन सिंड्रोम है, this is also known as trisomy 21st and मंगोलिज्म. क्यों इनको बोलते हैं मंगोलिज्म? क्योंकि जो ये चाइल्ड होते हैं, ये जो ये बेबी होती है, इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइक टू दोज ऑफ मंगोलियंस. सो द टर्म इज also known as मंगोलिज्म. डाउन सिंड्रोम इज also termed as मंगोलिज्म. क्लिनिकल फीचर्स जो इनके होते हैं, जो इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट आर लाइक टू दोज ऑफ जापानीज, टिबेटियंस एंड मंगोलिज्म. अब हम देखते हैं एट बर्थ babies with Down syndrome usually have certain characteristics, certain signs that include, first sign, that is the skull may be rounded, and small with flat occiput. जो ये बेबी होते हैं, जो इनका स्कल होता है वो राउंडेड होता है, इनका हेड जो है, स्कल जो है वो स्मॉल होता है, और जो इनका ऑसिपुट होता है वो फ्लैट होता है. नोज इनकी शॉर्ट होती है, एंड जो नेजल ब्रिज होता है वो फ्लैट होता है. नेजल ब्रिज इज फ्लैट. दिस इज द अनदर clinical feature. Also जो माउथ होती है, जो माउथ होता है, that may be opened, mouth may be opened with protruding tongue. माउथ जो है यूजुअली इन चिल्ड्रंस का ओपन ही रहता है, और जो ये टंग है ये बाहर होती है. दैट मीन्स कि दैट टंग इज द प्रोट्रूडिंग. दे आर हैविंग शॉर्ट नेक, जो आईज होते हैं दैट स्लैंट अपवर्ड, also another symptom, infants have hypotonia. That means they are having poor muscle tone. Hypotonia. Infants are having poor muscle tone. That condition is known as the hypotonia. Also जो इनमें ears होते हैं that are atypically shaped ears.
जो इनमें ईयर्स होते हैं वो एटिपिकली शेप्ड होते हैं और ईयर लोब में कोई ना कोई मॉल फॉर्मेशन होती है. An infant with Down syndrome can be born an average size. But will develop more slowly than a child with the condition. People with Down syndrome usually have some degree of developmental disability, but it is often mild to moderate. They are having also mental and social developmental delay, mental and social development delay. That means that the child may have impulsive behavior, as the children are having mental and social development इनमें delay हो जाता है, may mean that child could have impulsive behavior, poor judgment, slow learning capabilities, slow learning capabilities. These are the clinical manifestations. Also, medical complications often accompany with Down syndrome. In children में mostly medical complications होती है. These may include medical complications often accompany with Down syndrome. These may include congenital heart defects. Congenital heart defects वो defects होते हैं that are present since birth. That may be acyanotic or cyanotic congenital heart disease that are having hearing loss, poor vision, cataracts, hip problems, chronic constipation, sleep apnea, dementia, hypothyroidism, obesity, late tooth growth causing problems with chewing, and also Alzheimer's disease in later stages of life. Mainly Down syndrome में मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होती है इन चिल्ड्रंस में. कौन कौन सी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होती है? दैट आर हैविंग congenital heart disease. In congenital heart disease there may be acyanotic congenital heart disease or there may be cyanotic congenital heart disease. Also they are having hearing loss, poor vision, cataracts. Cataracts means clouded eyes. Hip problems होती है इनमें such as dislocation, chronic constipation, sleep apnea. Sleep apnea एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंटरप्टेड ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप होती है. देयर इज इंटरप्टेड ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप. ब्रीदिंग में इंटरप्शन आती है ड्यूरिंग स्लीप. दैट कंडीशन इज नोन एज स्लीप एपनिया. ऑल्सो देयर इज हैविंग डिमेंशिया. डिमेंशिया is a condition that means thought and memory problems. They are having thought and memory problems.
Also, in addition to this, there are some also medical complications. That is, they are having late tooth growth, causing problem with chewing. Also, Alzheimer's disease later in life. People जो ये children होते हैं with Down syndrome are also more prone to infections. They may struggle with respiratory infections, urinary tract infections, UTI, and also skin infections, because they are more prone to infections. So they may have respiratory infections, urinary tract infections, and skin infections. These are the clinical manifestations as well as and also the complications of Down syndrome. Thank you.